चारों की चौकड़ी यहाँ बैठी हुई है और ये है निर्माता निर्देशक सूरज जी, जिनकी फिल्म कंपनी राजश्री जगत विख्यात है और एक फिल्म बनाई है ऊंचाई, जिसका पहला शो होने वाला है अभी हमारे पीछे यहाँ प्रीव्यू थिएटर में। तो आमतौर पर होता है जब कोई चीज़ समाप्त हो जाती है तो एक भय से रहता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अच्छी बनी नहीं बनी, क्या आलोचना होगी, कितना क्रिटिसिज्म होगा। तो थोड़े से हम लोग सर थोड़े नर्वस हैं और ऐसा माना जाता है भवन की नर्वसनेस जो है वो उससे थोड़ी सी एनर्जी पैदा होती है कि आगे नर्वस इसलिए क्योंकि आगे और अच्छा होने वाला है। तो एक तरह से हम ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग सब नर्वस हैं और कुछ अच्छा ही होगा। अगर जिस दिन मैं थिएटर में नर्वस नहीं होता हूँ शो से पहले तो मुझे लगता है शो अच्छा नहीं होगा। ओह अच्छा। आई डोंट नो वेदर तो नर्वसनेस मतलब अच्छी बात, बट आपको ऐसा होता है कि हमेशा, है ना? हमेशा। आप भी नर्वस होते हैं सर? मैं तो यहाँ से बाहर चलने के समय नर्वस होता हूँ मैं। आप नर्वस हो कि नहीं आज? मैं तो बहुत नर्वस हूँ सर। किस बात के लिए नर्वस हो? आपने कितनी फिल्में बनाई हैं? 7th है सर। आप हर फिल्म में नर्वस होते हैं? हर फिल्म में नर्वस होता हूँ सर, बिकॉज सर इट्स अ डायरेक्टर स्पीक्स ऑन द माइक और बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन देता है, बट जब पूरी पिक्चर एक साथ देखते हैं तो मेरे हिसाब से हर पोल खुल जाती है डायरेक्टर की। सो दैट इज़ द फियर विद दिस प्रीव्यू थिएटर। आपको कैसी लगी फिल्म? थोड़ी बहुत आपने एडिटिंग करते वक्त देखी है, थोड़ा बहुत बताइए कैसी लगी। अब सर इससे पहले मैं आपसे सूरज जी पूछना चाहूँगा, ऐसे ही एक थोड़ा सा प्रोफेशनल विषय है, कब आपने चुना कि यही एक फिल्म बनानी चाहिए, ये कहानी बनानी चाहिए, और कितना समय लगा आपको? हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू फाइनली कम टू सम कंक्लूजन दैट दिस इज द फिल्म दैट आई विश टू मेक? आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व कि हमें क्यों चुना आपने? सीरियसली सर, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कोई बनाने जा रहा है कोई फिल्म तो क्या सोच के वो आता है कि क्या बनाना चाहिए? क्या आप मार्केट को देखते हैं कि कौन सी फिल्में चल रही नहीं चल रही हैं, देश की हालात क्या है, समाज की क्या हालात है, हाउ इज़ द टेम्परामेंट एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू बी एंटरटेनिंग फॉर all of us to make and see. So, and then after that, how do you conceive that this is the subject that I want to make, and I feel that these are the artists that you would want to cast? So this subject came from a writer in 2016, and about 3 men who take this trek to the Everest base camp. तो मेरे स्टाइल की तो पिक्चर नहीं थी, हमने राइट्स ले लिए सर। एंड ऑनेस्टली सर आई वाज राइटिंग अ फिल्म ऑन मैरिज विथ ऑल द दिवाली एंड विथ ऑल द ओरिजिनल, या विथ ऑल द रीति रिवाज, द तीज त्योहार। सो एज कोविड केम इन दैट फेज आई जस्ट felt that this subject should be made for hope, and it didn't leave me, and I kept telling myself, no, this is not my style, but it didn't leave me. And so we wrote it in COVID time in 3.5 months, because I just felt that everyone needs to challenge oneself, and I need to challenge myself. So sir, that's how this Unchai happened. And सर जब आप सोचते हैं कि आपको लिखना चाहिए, आप कहीं अकेले चले जाते हैं, घर में बैठते हैं, कहीं अलग जाते हैं, क्या होता है? तो मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ, क्या टेम्परामेंट क्या होता है सर? Sir, I write with my assistants, with my group, because sir, when I was younger I used to write alag se, thinking that I must present and I must get an okay, but over the years I realized no one is good. जो पहले लिखते हैं it's always the first version, like Neil Simon has written that writing is rewriting. So I bring my assistants, we talk, I get variations of everyone, so that's how I write. I don't go to any. तो एक तरह से सर हम लोग को ये जानना चाहिए that the assistants are actually more in knowledge than what we are when we be narrated the subject. Yes, sir. And that's a wonderful quality to have. Yeah. आपने ये सब्जेक्ट देखा या आपने सुना इसके बारे में, alright? क्या वो घड़ी थी जब आपको लगा कि यही बनना चाहिए, और आप कहाँ थे, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे? Sir, I was in my office, and sir, there were only talks that day about how
markets are going down and this film is not doing well, this is not doing well, this is not. So honestly, that day the talk was only about how the industry, how the no film is collecting itna. So I just felt I want to make one film where I'm not concerned about how many dancers, how many songs, what is going to be the first day collection, because all my life I've got a success in the first, so I've always been competing, and I wanted to make one film which I just want to make without bothering. So I remember telling Anupam sir also, I just want to make for myself. Something remains and it doesn't go. Yeah. It doesn't go and it just remains and it gnaws from inside that this needs to be. Yeah. So for Unchai, it's just not that I want to break this compulsion to prove myself in the numbers. That Yeah. was the real. So it was liberation, and the COVID was just eating up everyone. So I just wanted to take one big challenge. Right. So that is how this film. Speaking about Vatavaran and what's going on in Kathmandu, in the lobby, he was sitting once. I saw him by himself. And he's looking this direction, and I was he was in lower level, and I was walking towards him, but he didn't notice me. And then he suddenly noticed me. So sorry, I said, "What are you doing?" Thinking about tomorrow's shots in the middle of a busy lobby. Yeah. So he's fine, I think, wherever he was. He's thinking all the time in mind. But so, So I think that's the the most directors, creative people. How do they function like that? Yeah. So, if I may, I've done, this is my 5th film with him. Ji. I call him Buddha because I think he was not wanting to direct this film, if I'm not mistaken. So somebody else was directing this film, or he was thinking of somebody else. Ji. How did you decide that you want to direct this film? that one day. That is the That day. one day when only talks for Anupam sir only of business, ये इतना कितना इतना करो तो इतना turnover यहाँ बेच दो, ये इसको बेच दो, वो उसको कर दो, and I just felt it's not the way I would like, and it just a drop of a hat. I just picked up this subject which was not supposed to be mine, and it didn't leave me. On that day, you were not nervous when this No, thought came. today I am. So what I'm trying to say, understand, Yes, sir. and I think on behalf of everybody, why are you nervous today? Because you followed your heart and you followed your path and you have come here, the film is going on. Why are you nervous today? But sir, now I don't know whether actually one craves for appreciation, no sir. How sweet. So people should like it. It's not a But whose opinion matters to you? right now the stress is how will we all like the film, and sir, it has been my opportunity. I mean, it's an honor to work with this cast. I mean, where will I get more? And interestingly, someone from the crew that day was telling us that only amongst the cast of Unchai there is an experience of 350 years. Huh? 350 Age years, sir. experience. Age. No. The work Acting experience. Professional experience. Oh, how long we've been working? Yes, Yes, sir. sir. तो मिला के जो 5 लोग हैं, आप, मैं, ये और सारिका जी और नीना जी, तो सबका मिला के सर मैंने तो नोट भी करके रखा है कैसे कैसे सर सर बताइए? देखिए सर 53 इयर्स, अनुपम सर 40 इयर्स, बोमन सर 21, सारिका जी 55, डैनी जी 51, नीना जी 40, सर ऐसे तो 350 सर, 350 years सर, of आप experience. कहना So I will get nervous how everyone will like the film. अब आप इनसे Yeah. वो सवाल पूछिए कि आपने कैसे चुना, मतलब कैसे डिसाइड हाँ सर, वो 350 देख लिया उन्होंने. So these were my first choices. हाउ, मतलब व्हाई? Sir, the day I had got the subject in 2016, I knew this cast. But sir, अब जब तक film one keeps growing, whether the subject evolves, whether the characters has layers, doesn't have. But I was fortunate that I got. So I do not know about Amit ji and Mai, but there was one person who was sitting here who was not doing the film. Would you like to throw a light on that? So you only throw. अच्छे गाली हाँ, रखने के साथ बोल दीजिए. You were not doing this. Sir, I love your reaction, sir. नहीं, Sir, sir. हाँ sir. Yes, sir. सर इन्होंने मुझे जिस दिन कहानी सुनाई तो आई वॉज वेरी मूव्ड. आई वॉज इन अमेरिका बट देन आई डिसाइडेड एंड ही वाज केप्ट सेइंग क्यों आप वहाँ रह रहे हो, आप वापस आ जाओ, यहाँ पर काम करो. तो फिर इन्होंने मुझे कहानी सुनाई और आई गॉट टू नो दैट यू आर पार्ट ऑफ इट एंड आई एम बड़ा ये तीसरा जो कैरेक्टर बमन को मैं लेना चाहता हूँ, बट बमन जो है वो थोड़ा सा निश्चित, मतलब वो नहीं है, श्योर नहीं है कि कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी पर्सनल हाँ, इशू है या कुछ प्रॉब्लम है, बट नहीं कर रहे हैं. सर मैं बाहर गाड़ी में बैठा और मैंने इनको फ़ोन किया तो मैंने कहा तुम बड़े
बेवकूफ़ किस्म के इंसान हो यार, तुम ये फिल्म कैसे नहीं कर सकते हो, तुम पागल हो क्या? I know that people think that I'm over optimistic, I exaggerate things, but according to me, this is, he will get nervous, you will sort of not comment on it, but according to me, this is one of the finest films I have at least worked in. Out of the 530 films that I've done, so let me speak on my behalf. So that's what I conveyed to him. मैंने फ़ोन रखा, भाई साहब ने इनको इमीडिएटली फ़ोन yes, किया, किसी और के पास तो नहीं गए. No, that's मैं करूँगा, मैं करूँगा. I was moved. No, that's Yes. not the reason. I was going through a little rough Yes. patch. Everyone in the family was ill, and you know what was happening during the pandemic. Also, I was starting my own film at that time. Yeah. And when he said that, I was moved by his passion to include a fellow actor in the fray, to say you should not let an opportunity, because I think he respects. Sorry to put it very bluntly, but there's a respect for the fellow actor. And he said you should be doing Yeah, that's it. as an actor. And I was moved by that, honestly. And And I was very moved. so by sir, it. I got Anupam sir moments, but I have to say, sir, when I sent a message to sir, and sir was very busy with KBC, तो सर फिर सर ने मेरे को 4 बजे का एक दिन टाइम दिया, डेट आई येट रिमेंबर. अब उस दिन आई हैड टू टॉक टू सर, एंड सर इज गोइंग टू बी हियर. तो 1.5 एंजाइटी मेडिसिन लिया मैंने, फिर सर आए. एंड सर मैं नहीं बोलता सर. सर ये बस सर इट वाज अ फैक्ट. एंड सर ऑन दैट, सर कम टू द पॉइंट, क्या हुआ फिर? नहीं सर, फिर- नहीं सर, फिर- we want- फिर- मतलब नहीं सर, पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं. नहीं सर, पॉइंट ये हुआ, सर आए सामने, मैंने ऐसे ही सर पूरा रिहर्स करके बोला था क्या क्या बोलना है मुझे, क्या क्या सुनाना है, कुछ छूट नहीं जाए. एंड सर देन स्माइल्ड मतलब and said when do you want to start. अच्छा, And after you then narrated. after, and then he gave the credit to Abhishek is after that he should do the film. So that's how this casting. And sir was America, sir. I was worried ki if he won't come, then what do I do of Om Sharma, the character. Right, So right. then he also came. So that is how this friendship film. डैनी साहब की कास्टिंग के बारे में कैसे है आपने? Sir, Danny sir, I was very keen. He has of course a guest appearance in this film. So Danny sir को मैं 6 महीने से पीछे पड़ा था कि तो वो बार बार बोल रहे नहीं सूरज अभी तो कोविड है, मैं क्या होऊंगा कहूँगा. तो हम नेपाल शूट कर रहे थे सर, तो वहाँ से मैं उनको मैं उनको वहाँ से पहाड़ों के फ़ोटो भेज रहा हूँ, वो सिक्किम से मुझे बारिशों के फ़ोटो भेज रहे हैं कि, तो मैं उनको बोल रहा हूँ आओ, वो बोले मेरे पास है सब कुछ यहाँ. अच्छा. बारिश, आई एम टेम्पटिंग हिम, बट फाइनली आई सेड कि सर आई वांट यू, आई विल कम देयर टू गेट यू बैक. देन ही केम. सो रमन आपसे पूछता हूँ, डज दिस फिल्म इन योर माइंड, अभी यू सी द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा द Right. मोमेंट पीपल कम आउट. बिल्कुल. ऐसा कुछ नहीं है. आई फील दैट इट विल बी वेरी गुड. विल दिस फिल्म फीचर इन योर एज द एक्सपीरियंस or as the story in the top 10 films of your life? My finest experience in my entire career. Why? Firstly, yes, I'm working with Suraj ji and you fine gentlemen, all of you, and Sarika ji, Nina ji. But I think after a long time, this is a film about human spirit, humanity, which actually emanates from this gentleman. It is his personality in the three of us. I say this very humbly. And we didn't need glycerin through the film. Yeah. You would just come say something, and there we are in the moment. Because the film is about goodness and kindness and humanity, which is missing today, I'm sorry to say. And this film should restore that. We are eventually human beings. Stories are not about events ke pahad pe chade. It's about people Human triumph. and not about events. And this is a movie about people. And good people and humanity and kindness and friendship. सर ये इज द ओनली डायरेक्टर जो अपने हमारे डीओपी मनोज का झगड़ा करता था और वो कहता था अभी 4 घंटे और काम कर सकते हैं. मैंने नहीं करना, गुस्से हो जाते थे सर, क्यों करूं मैं काम, मेरा काम जितना मुझे करना था कर लिया ना. That's it, sir. Why to do? So you tell me, Anupam sir. So with this experience, why should there be more work if I'm not clear? नो सर, इज़ नॉट द एक्सपीरियंस. मैं आपको बताऊं सर, बहुत से डायरेक्टर्स के साथ हमने काम किया हुआ है सर, लेकिन इतना परफेक्ट बैलेंस्ड प्रिपरेशन मैंने और किसी को नहीं देखा. Sir, I don't mind what happens to the screening. The dexterity with That's which true, sir. Thank you, sir. he approaches the work, sir, it's not a joke, I'm telling you. He is You blessed go to also. every artist and you personally explain every scene, despite the fact that we've been given the scene, कहानी बता दी गई है, सब कुछ. ये बड़ा
एक बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। सर, इफ आई मे ऐड टू दैट, नॉट ओनली आर्टिस्ट सर, अपना मेकअप आर्टिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल जी। कॉस्ट्यूम वर्कर, कौन सा ड्रेस कैसे होगा, हाँ उनको भी बताएंगे पूरी मेकअप कहानी, कैसा पूरा होगा, scene, बाल कैसे होंगे। वो भी लिपसिंग करते हैं सीन होते हुए, बट द क्रेडिट आल्सो गोस टू हिज अमेजिंग टीम। ही हैज एन अमेजिंग सेट ऑफ नॉट ओनली प्रोफेशनल हार्ड वर्किंग पीपल बट ग्रेट पीपल, हार्ट वार्मिंग, अमेजिंग, लवली पीपल ही हैज। So, but having great people need somebody who can choose those people. Of course, I agree. There was one shot, so if I might interject, there was one shot, there was a fog, and he said, okay, fog, and let's do the scene with the three of us in the shot. And he said, very nice, lovely, good shot, Sabne. Very nice, Manoj, very nice. And he turned to the gentleman who was the fog machine. Beta, बहुत अच्छा fog दिया। Everybody feels part of the film. So do you know that the Rashri films was established on 15th of August 1947? Yes, yes. Itself, सारे फैमिली के सारे मेंबर एक जैसे कैसे हो सकते हैं एक जैसे हैं सर। Amazing. मतलब हमको लगता है फिल्मों में ऐसे हैं, मगर इनके घर जाओ तो सर वैसा ही एटमॉस्फेयर है। Yeah, temperamentally you're all the same, sir. थैंक यू सर। अभी आप थोड़ा कम नर्वस हुए हैं? यस सर, अभी बेटर हूँ। बेटर है ना? Yes. अब बहुत पिक्चर आपकी तारीफ होगी, बहुत लोग तारीफ। आपने जो बेसिक मुद्दा बताया ना, मैंने ये फिल्म क्यों बनाई, Yes. आप उस मुद्दे को मन में रखिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इफ़ आई फील स्ट्रेस लो, आई गो टू राजश्री फिल्म्स एंड आई फील बेटर। तो यू हैव गिवन अस What are you trying to convey? I mean, apart from the fact कि एक हमने फिल्म बनाई है, यस सर। बट हमेशा जो बनाता है सर, उसके मन में कहीं होता है कि मैं इस धार को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ या इस सोच को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। आपके मन में क्या है? सर, एज अ चाइल्ड आई येट रिमेंबर सर, हमको आर्ट में ना सर ऐसे नेचर बनाना पड़ता है, तो विद क्रेयॉन्स आई हैव ऑफन मेड दिस माउंटेन्स एंड विद दोस कलर्स ऑफ जी जी जी, एवरेस्ट। और पीछे से सूरज निकल रहा Yes, sir, है, yes, एक दो sir. चिड़िया बनी Yes, sir. है, एक छोटा सा कॉटेज है। So every time this mountain and this Everest I used to make, so I used to always wonder, people will climb, people will go, and I used to be कैसे लोग जाएंगे, क्या करेंगे। So the theme is what sir says in the end of the film is that सब लोग तो हिमालय के दर्शन नहीं कर सकते, बट हम ये ना भूलें कि हम सब के अंदर हमारा वो एवरेस्ट, वो हिमालय, वो शक्ति है जिससे हम दुनिया की हर ऊंचाई को पार कर सकते हैं। सो एक्चुअली इन दिस फिल्म आई हैव एक्चुअली क्लाइम्ड, और आई हैव डन एवरीथिंग व्हिच इज नॉट मी। जो आपका कन्विक्शन था यस वो आपको लगता है पूरा हुआ इसमें? यस सर, एब्सोल्यूट। That's all that matters. That's the best question. सर, हम लोग सब बेसिकली क्या है देवी और सर, जो हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर हमारी फिल्म ऊंचाई के बारे में थोड़ी सी बातचीत करने के लिए। राजश्री प्रोडक्शंस का नाम लेते ही सब लोग उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसी ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं वहाँ की कि उनको लगता है कि अगर राजश्री है तो सब कुछ ठीक है, सर्वश्री है अगर राजश्री। लेकिन सही में सर, हम सब ऐसा मानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर काम करना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और अगर साथ में हमारे साथ सूरज जी हैं और इनका एक जो मैजिकल वॉन्ड है इनके हाथ में, वो इस फिल्म पे भी लगे, और बस थोड़ी देर में हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो आपकी कृपा बनी रहे और क्या। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मखमल